Welcome to Conceptual Learning Academy with MCQs on FIA Act 1974. Today we are discussing repeated and most important MCQs on FIA Act. वीडियो पे जाने से पहले मैं एक वजाहत करता चलूँ कि ये हमारे 100 MCQs की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं या बाकी आने वाले पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले क्वेश्चंस का PDF आंसर हासिल कर सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ जाके आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। Question number 21. FIA Act 1974 officially published in Gazette of Pakistan on Option 1 17 January 1974, Option 2 1st December 1974, Option 3 1st January 1975, Option 4 17th January 1975. The correct option is 17 January 1975. FIA Act 1974 पाकिस्तान के गज़ट में पहली दफ़ा 17 जनवरी 1975 को शामिल किया गया, मतलब इसको अशात किया गया 17 जनवरी 1975 को। क्वेश्चन नंबर 22. सेक्शन नंबर 1 of FIA Act 1974 contain Option 1 short title, Option 2 extent of FIA, Option 3 commencement of Act, Option 4 all of the above. The correct option is all of the above. सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल भी और एक्सटेंट ऑफ FIA भी और कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट भी शामिल किया गया है, मतलब सेक्शन नंबर 1 ऑफ FIA एक्ट 1974 में ये तीनों चीज़ों का जिक्र किया गया है। Question number 23. Special definitions given to words in section number dash in FIA Act 1974. Option 1 section number 1, Option 2 section number 2, Option 3 section number 3, Option 4 none of the above. The correct option is section number 2. FIA Act 1974 के सेक्शन नंबर 2 में स्पेशल डिफिनीशंस किए गए हैं उन वर्ड्स की जो कि इस एक्ट में यूज़ किए गए हैं। Question number 24. Section number 3 of FIA Act 1974 is about the constitution of agency. There are dash subsection in it. Option 1 1, Option 2 2, Option 3 3, Option 4 4. The correct answer is 2. FIA Act 1974 के सेक्शन नंबर 3 जो कि कंस्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के बारे में है, उसमें 2 सब सेक्शन है। इस क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन को कवर किया गया, जैसा कि सेक्शन नंबर 3 में किसके मुतालिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी ऑफ FIA के मुतालिक है, और दूसरा उसमें 2 सब सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 25. सेक्शन नंबर 4 ऑफ FIA एक्ट टेल्स अबाउट ऑप्शन 1 सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, ऑप्शन 3 पावर्स ऑफ एजेंसी, Option 4 indemnity. The correct option is superintendence and administration. सेक्शन नंबर 4 सुपरिंटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक हैं। क्वेश्चन नंबर 26. Powers of the members of agency is discussed in section number dash 3, Option 2 4, Option 3 5, Option 4 6. The correct option is 5. पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एजेंसी, इनको सेक्शन नंबर 5 में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27. सेक्शन नंबर 6 ऑफ द FIA एक्ट 1974 डिस्कस अबाउट डैश। ऑप्शन 1 पावर टू अमेंड द शेड्यूल, ऑप्शन नंबर 2 डिलीगेशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन नंबर 3 पावर टू मेक रूल्स, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज power to amend the schedule. सेक्शन नंबर 6 पावर टू अमेंड द शेड्यूल के मुतालिक तफसीलात फराहम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28. डिलीगेशन ऑफ पावर्स डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर डैश। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8,
द करेक्ट ऑप्शन इज 7। सेक्शन नंबर 7 में डिलीगेशन ऑफ पावर को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन नंबर 8 ऑफ FIA Act 1974 tells about dash. Option 1, power to make rules. Option 2, indemnity. Option 3, appointment of officers. Option number 4, none of the above. The correct option is indemnity. क्वेश्चन नंबर 29 में जो सेक्शन नंबर 8 का मुतालिक पूछा गया है उसका सही आंसर इंडिमनिटी है। क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन नंबर 9 ऑफ FIA Act 1974 tells about dash. Option number 1, delegation of powers. Option number 2, power to amend schedule. Option number 3, power to make rules. Option number 4, all of the above. The correct option is power to make rules. सेक्शन नंबर 9 पावर टू मेक रूल्स के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन नंबर 10 ऑफ FIA Act 1974 discuss about repeal. It has how many subsection? Option number 1, 4. Option number 2, 5. Option number 3, 6. Option number 4, 7. The correct option is 5. FIA Act 1974 का सेक्शन नंबर 10 ये सब सेक्शन 5 रखते हैं जो कि रिपील के मुतालिक है। इसके और डिटेल्स आने वाले वीडियोस में ज़रूर जिक्र किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, देयर आर डैश सेक्शंस इन FIA Act 1974 इन टोटल। ऑप्शन नंबर 1, 10. ऑप्शन नंबर 2, 12. ऑप्शन नंबर 3, 15. ऑप्शन नंबर 4, 20. द करेक्ट ऑप्शन इज 10। FIA Act 1974 के टोटल 10 सेक्शंस है जिसका तफसील ऑलरेडी इस वीडियो में बयान किया गया है। बाकी आने वाला जो डिटेल है वो आने वाले वीडियोस में जिक्र किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर डैश शेड्यूल इन FIA Act 1974 इन टोटल। ऑप्शन 1, 1. ऑप्शन 2, 2. ऑप्शन 3, 3. ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज 1। FIA Act 1974 में टोटल एक शेड्यूल है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्यूल का जिक्र किया गया है, जो सेक्शन का जिक्र किया गया है उनकी तफसील आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, Who was the President of Pakistan when FIA Act 1974 promulgated? Option 1, Fazl Ilahi. Option 2, Zulfikar Ali Bhutto. Option 3, Ziaul Haq. Option number 4, none of the above. The correct option is Fazl Ilahi. 1974 में जब FIA एक्ट को प्रोमलगेट किया जा रहा था तो उस वक्त या 1975 में जब पब्लिश किया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान का सदर फजल इलाही था। क्वेश्चन नंबर 35, इन सोल शेड्यूल ऑफ FIA Act 1974 offences punishable under various sections of dash code. Option 1, Pakistan Penal Code 1860. Option 2, Pakistan Police Code 1898. Option 3, Pakistan FIA Code 1975. Option 4, none of the above. The correct answer is Pakistan Penal Code 1860. FIA Act 1974 का जो वाहिद शेड्यूल है उसमें जो ऑफेंसेस पनिशेबल का जिक्र किया गया है वो किस कोड के तहत होंगे? वो पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के तहत होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द हेडक्वार्टर ऑफ FIA इज बेस्ड इन। ऑप्शन 1, रावलपिंडी. ऑप्शन 2, कराची. ऑप्शन 3, लाहौर. ऑप्शन 4, इस्लामाबाद। द करेक्ट ऑप्शन इज इस्लामाबाद। FIA का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 37, अ वुमन कैन बी अरेस्ट बाय डैश ओनली फीमेल स्टाफ, मेल स्टाफ कैन डू, could not arrest by anyone, none of the above. The correct answer is only female staff. एक किसी भी औरत को सिर्फ औरत स्टाफ ही अरेस्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 38, what is NR3C related to FIA? Option 1, section of FIA Act. Option 2, a law related to FIA. Option 3, cyber crime wing of FIA. Option 4, none of the above.
द करेक्ट ऑप्शन इज साइबर क्राइम विंग ऑफ FIA। NR3C का जो मुकम्मल नेम है वो नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम है, ये इसका एब्रीविएशन है। Question number 39. FIA Academy is based in Dash City. Option 1 Murray, option 2 Karachi, option 3 Islamabad, option 4 Lahore. The correct option is Islamabad. Question number 40, which is last question of today's video. Counter-terrorism wing CTW is related to which federal department? Option 1 Police, option 2 FIA, option 3 Army, option 4 Navy. The correct option is FIA Counter-terrorism wing CTW। ये FIA का एक विंग है जो कि रिसेंटली ही बनाया गया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे प्लेलिस्ट को और जाके डिस्कवर कीजिए। थैंक यू।